Think and Grow Rich by Napoleon Hill. आज Napoleon Hill's 140th birth anniversary on 26th of October, and it's a tribute which I want to give to my mentor. And why I'm showing this book to you? See, I study these principles every single day since last 8 years. Every day I study few pages from this, and this is special. I'll just show this to you. I'm not going to show this to boast anything or to show off. लेकिन कुछ चीजें which are very close to my heart. This is actually personally autographed by Napoleon Hill. And I'm really privileged and honored and humbled कि मेरे पास ये copy आई है. And I got this when I went to the US to my parent company in USA, the Napoleon Hill Foundation, Virginia. So आज उनके birthday पे let's celebrate. Let me give you out 40 pointers. It's 140th birth anniversary of Napoleon Hill and 40 important things. 40 things which I learned from Napoleon Hill. They've got many, I've learned many of the things, but ये first 40 things मैं आपसे share करने वाला हूँ. So let's start this. The first point is having a definite major purpose. Yes, my friend, this is the starting point of all achievement. आपको आपका लक्ष्य क्या है? It has to be definite. ये आपका major purpose होना चाहिए, and this should be the why of your life. यहाँ पे लोग बोलते start with why, Simon Sinek, transformation, ikigai, ये सब चीजें भी famous हो गई है. But Napoleon Hill was the starting person who said that everything has to start with an idea, with a purpose, with a thought. So ये पहला step है, which is having a definite major purpose. The second point, having a strong burning desire. एक साधारण सी इच्छा आपके लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देगी, बट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, कि ऐसी ज्वलंत इच्छा, और कैसे आपके डिजायर को बर्निंग करना है, उसके लिए आई हैव गॉट अ कनेक्शन ओवर हियर. देयर आर 9 मोटिव्स, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, दैट हाउ यू कैन रियली स्टार्ट टू कन्वर्ट योर नॉर्मल डिजायर इनटू अ स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर. दैट्स द सेकंड पॉइंट व्हिच आई लर्न फ्रॉम नेपोलियन हिल. हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर. द थर्ड पॉइंट, फेथ. Having that unwavering faith. And principles of success में बताया गया है कि आपका faith should be applied faith. Faith without action is dead. आपको आपके faith को आपके लक्ष्य के प्रति apply करना है. Every day you got to take actions with that unwavering faith. एक ऐसी belief कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा goal, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है. That's the third thing which I learned from my mentor Napoleon Hill. The fourth one, technique of auto-suggestion. ब्यूटीफुल टेक्निक. सभी लोग बोलते हैं कि यू गॉट टू हैव द फेथ. विश्वास रख भाई, भगवान पे विश्वास रख, अपने आप पे विश्वास रख, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. लेकिन कोई बताता नहीं कि कैसे फेथ डेवलप करते हैं. ऑटो सजेशन इज द ओनली टेक्निक विच यू कैन डेवलप द फेथ. What is auto suggestion? Auto suggestion is self suggestion. आप अपने आप को सजेशन देते हो, and that's where you really start to develop this faith. एक beautiful affirmation देता हूँ आपके लिए for you to really have that strong faith that you're going to get the results. I believe I can. Repeat after me. I believe I can. I believe I can. And that's where you can really start to develop this particular faith. Auto-suggestion is the fourth point which I learned from my mentor, Napoleon Hill. The fifth one, Mastermind principle. अरे बाप रे, इतना wrongly ये लोग use word करते हैं mastermind का. बस कुछ भी बोलो mastermind, mastermind, mastermind. मतलब ही नहीं समझा what is a mastermind. अभी तो normal teamwork को mastermind समझ लेते. गलत जवाब. Teamwork ordinary है. Mastermind extraordinary है. Understand this. What is the definition of a mastermind? Mastermind is a combination of 2 or more minds, not 2 or more people. वो teamwork हो गया. Mastermind means is a combination of 2 or more minds coming together and to achieve a common objective. और जब ये दो minds का सम्मेलन होता है, तभी एक third mind जागृत होता है, and that is the real power of the mastermind. This is the fifth thing which I learned from my mentor, Napoleon Hill. The sixth one. This is one of my favorite learnings, and this is the real reason of my success. Going the extra mile. कुछ अब ज़्यादा करो. Something more, something better which is useful or unexpected. That is going the extra mile. इस कलयुग में कोई going the extra mile करता ही नहीं है. अरे भाई, सिंगल माइल ही जाता नहीं है. जितना बोला है वो ही नहीं करता. एक्स्ट्रा की कहाँ बात कर रहे हो? But when you understand this principle, not intellectually, but emotionally, और आप उसको अमल में लाते हो, you start to apply this, you go extra miles, that's where you really start to become the king in your industry. मेरी कोई competition है ही नहीं. There is no competition when you go the extra mile. You can eliminate, terminate and wipe out your competition. Amateurs होते हैं ना, they compete. But professionals, they create. You really start to become a pro in your industry when you go the extra mile. By the way, if you want to come for my daily planning session, सुबह 6:30 बजे होते हैं, 20 minutes का session है, completely free. I have actually eliminated any competition with this particular thing, and come learn free है. There'll be a link over here somewhere in the comment box. Join करिए and really start to develop that mindset. This is the sixth thing which I learned from my mentor Napoleon Hill. Go the extra mile. The seventh one, enthusiasm.
One of the 17 principles of success is enthusiasm. How to become enthusiastic? Act enthusiastic to be enthusiastic. Enthusiasm नहीं है तो लाइफ में शायद से आपके गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे. This is the 7th one. What's the 8th one? Self-discipline. One of the 17 principles of success is self-discipline. What is discipline? Discipline is the ability to give yourself a command and follow it. India has got talent, शायद से India has not got discipline. You really start to develop this discipline and आपको 100% you get the success with this discipline. This is for example me. I just come over here, talk on my camera and I shoot. I don't have any other inhibitions. It's a discipline and regularly I'm giving out this content on YouTube channel consistently. That's the discipline. If you have the discipline, you are going to get the success. The 9th one. Controlled attention. अरे इतने distractions हैं. Understand this. Control attention is one of the principles of success. जब तक आपका मन आपके वश में नहीं रखा, आपने attention नहीं रखा कि that's my goal and that's the result which I want to accomplish. इतना भटकता रहता है हमारा मन, इतना चंचल मन है. What is the meaning of distraction? जब भी traction नहीं है, तभी distraction आ जाता है. Traction आएगा तभी you can leapfrog your success. तो अगर ट्रैक्शन चाहिए, यू वांट टू क्वांटम लीप योर सक्सेस, तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा. रियली मन को वश में करिए. दैट्स वेयर यू स्टार्ट टू गेट दैट कंट्रोल अटेंशन. द 10th वन, टीम वर्क. अंडरस्टैंड दिस. मास्टरमाइंड और टीम वर्क में बहुत फर्क है. टीम वर्क में सारे मेंबर्स का एजेंडा कॉमन नहीं हो सकता. मे बी दे डोंट हैव अ गोल टू अचीव दैट बिग टर्नओवर. Maybe teamwork is just for a small goal. So normal teamwork is also very important. Maybe teamwork with your colleagues, with your associates, with your boss, वो भी जरूरी है. लेकिन शायद से आपके बॉस का गोल और आपका गोल may not be the same. तो बॉस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मास्टरमाइंड, लेकिन बॉस डेफिनेटली आपका टीम वर्क का पार्ट हो सकता है. सो अंडरस्टैंड दिस डिस्टिंक्शन. टीम वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट डू इट अलोन. यू गॉट टू हैव अ टीम अराउंड यू टू सपोर्ट यू टू गेट द रिजल्ट्स. मास्टरमाइंड तो बेस्ट ही है, लेकिन अगर मास्टरमाइंड नहीं फॉर्म हो रहा है, स्टार्ट विद टीम वर्क एंड देन उसके नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं टू गेट योर मास्टरमाइंड. द 11th वन, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी एंड डिफीट. हर एक हर्डल, हर एक ऑब्स्टिकल, कोई भी डिफिकल्टी आती है, उसमें क्या सीखना है. अंडरस्टैंड दिस. फॉरगेट द डिफिकल्टी, रिमेंबर द एक्सपीरियंस. फॉरगेट द डिफिकल्टी, रिमेंबर द लेसन. हर एक डिफिकल्टी में देयर इज अ सीड ऑफ अपॉर्चुनिटी. वहां पे एक बीज रहेगा जहां से आप कुछ सीख सकते हो, एंड दैट्स वेयर योर एक्सपीरियंस कैन बी राइपन्ड एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल. दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट. लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी एंड डिफीट इज द नेक्स्ट वन व्हिच आई लर्नड. द 12th वन इज क्रिएटिव विजन. अंडरस्टैंड दिस. आपके पास एक विजन है और अगर आपने उस विजन को क्रिएटिवली यूज किया ताकि आपके गोल्स अचीव हो पाए, दैट्स वेयर यू कैन मल्टीप्लाई योर रिजल्ट्स. अंडरस्टैंड दिस. इमेजिनेशन कैन रन वाइल्ड. Yes, your imagination can be wild sometimes, लेकिन आपका विजन जो है, it is focused towards your goal. That's the distinction between having a creative vision and just normal imagination. Develop creative vision. For example, Steve Jobs had a vision कि मुझे हर एक इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन चाहिए. Henry Ford had a vision कि I want a car in every house. That is the vision. Do you have the vision for yourself? How you want to really start to move forward? I have a vision that every household should start to think and grow rich. Every human being should get its full potential utilized and start to think and grow rich. Start to develop creative vision and you can start to go to the next level. The next one. The golden rule. बहुत ही जबरदस्त principle है. What is the golden rule? Do unto others as you would have them to do unto you. आप दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो वो आपसे करे. इसका मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया कि क्यों गोल्डन रूल फॉलो करना. अंडरस्टैंड दिस. व्हाट्स द पर्टिकुलर वीडियो. दिस इज अ वेरी पावरफुल लेसन. इट्स नॉट जस्ट डूइंग, इवन थिंकिंग. अगर आपने किसी के बारे में गलत सोचा भी, दैट्स वेयर यू आर वायलेटिंग दिस पर्टिकुलर गोल्डन रूल. अंडरस्टैंड दिस पावर ऑफ गोल्डन रूल एंड रियली स्टार्ट टू मेक योर लाइफ रिचर. द नेक्स्ट वन, having the cosmic habit force. Understand this. This entire universe is working with some habit. The planetary movements, the sun coming in and rising at a particular time, the sun setting, the tides coming in, the tides going out, the waxing and the waning of the moons. सारे ब्रह्मांड में सब कुछ जो सृष्टि में हो रहा है, everything is happening in order. ये निसर्ग का नियम जो है, ये विश्व का जो विधान जो है, everything is happening in a particular system. एक habit force से है. उस habit force से आप अपने हैबिट्स को डेवलप करेंगे, तभी वो नेचुरल फोर्स आपके साथ में काम करने लगेंगे. It's a difficult concept to understand and I'm going to make a special video on this, how to use the cosmic habit force and really start to get the results. Let's go to the next one.
Positive mental attitude. Yes, my friend, attitude is everything. Positive mental attitude is the number one richness in life. Attitude is a combination of three things: your thoughts, your feelings and your actions. ये तीनों चीज को आप combine करते हो and that forms your attitude. This is the next thing which I learned from my mentor Napoleon Hill. Accurate thinking. What do you mean by accurate thinking? ये one of the 17 principles of success है. Accurate thinking means जो भी information data बाहर से आ रहा है उसको आप filter करो और उसको आप information के form में लेके आओ. उस information से आप divide करो दो भागों में कि most important information which is relevant for your goals and which is not relevant for your goals. उस most important information से जो भी information जो आप use कर पाएंगे to take actions to achieve your goals, that is where you can start to have accurate thinking. See, most people in this world are so much of in this data. इतना data, इतना information आ रहा है कि हमारे पास wisdom ही नहीं है. We are having lot of data and information and we are lacking in wisdom. जब यह wisdom को आप develop करेंगे तभी तो आपको results मिलेंगे. This is where accurate thinking starts to help you to focus on what is important and then you start to use those information and get the results. The next one is very powerful. Persistence. Persistence is that unwavering faith कि कुछ भी हो जाए, I am never going to give up. Giving up is never an option. निरंतरता से आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ. This is the 8th step to riches. And most people in this world become successful not because of their talent or skill sets or abilities or their luck, but they become successful because they have not learned to give up. Giving up is never an option. Change your plan, but don't change your goal. This is where what I learned from my mentor: never ever give up. Salesmanship. Napoleon Hill was a very good salesman. In fact, एक छोटी सी story बताता हूँ आपको. When W. Clement Stone, the richest man in the world, the chairman of the combined insurance company of America, wanted to make his insurance trained salesman trained, so he hired Napoleon Hill. उन्होंने नेपोलियन को बुलाया कि आप थिंक एंड ग्रो रिच प्रिंसिपल्स को हमारे सारे सेल्स एजेंट को सिखाइए. 3000 इंश्योरेंस एजेंट्स को नेपोलियन हिल ने खुद सेल्स ट्रेनिंग दी एंड दैट्स व्हेन Combined Insurance Company of America became the number 1 insurance company in the world and W. Clement Stone became the richest man in the world in 1975. Understand this story. You got to sell and sell, otherwise you'll be sold in life. Selling is serving. You cannot not be selling. अगर आपको sales नहीं अच्छी लगती, that means you are not good at sales. Start to like sales, and that's what I learned from my mentor Napoleon Hill. Decision making. Decision has to be taken. The decision making is the mastery over procrastination. And Napoleon Hill says that all successful people are quick and fast decision makers, whereas all failures, they hardly take any decisions. Start to take decisions right now. If you haven't been a part of Think and Grow Rich community, register right now and see how you can really start to get into this mastermind and take your results to the next level. पार्ट हिस्सा बन जाइए थिंक एंड ग्रो रिच मास्टरमाइंड का. जिंदगी भर का साथ आपको मिलेगा एंड दैट्स वेयर यू कैन रियली स्टार्ट टू मल्टीप्लाई योर रिजल्ट्स. द नेक्स्ट वन, ओवरकमिंग फियर्स. फियर, डर. अरे बाप रे, कितने टाइप के डर रहते हैं. नेपोलियन हिल सेज देयर आर द 6 बेसिक फियर्स. Fear of losing money, fear of criticism, fear of loss of love, fear of ill health, fear of old age, fear of death. ये 6 बेसिक फियर्स है और अगर ये 6 बेसिक फियर्स से अगर आपका मन नहीं भरता और मे बी यू आर नॉट एबल टू सी वेयर एग्जैक्टली इज द एनिमी, तो वो 24 अदर फियर्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं. पर वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको आपके एनिमी को आप पहचान पाओ. यू कैन रियली फोकस ऑन द पर्टिकुलर फियर विच इज स्टॉपिंग यू एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड टेक दोस पर्टिकुलर एक्शंस एंड गेट द रिजल्ट्स. द नेक्स्ट वन, बजटिंग टाइम एंड मनी. उस जमाने में Napoleon Hill mentioned that you got to budget your time because that's the only precious resource. That's the only limited resource. बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा. So budget your time and budget your money. अगर पैसा आप attract भी करते हो using the power of Think and Grow Rich, but really use your budgets, invest wisely and you also spend wisely. Do not be a spendthrift. And that's where he mentioned that all successful people have a plan to save. They have got a willpower to save. So budget your time, budget your money because these are the two resources which are there for you, which are very scarce और उसी को हमें use करना है. Everybody is running after time freedom and money freedom. आपको इसको बजट करेंगे ताकि आपको आपका टाइम फ्रीडम एंड योर फाइनेंशियल फ्रीडम आर गोइंग टू कम फास्टर. द सबकॉन्शियस माइंड. Napoleon Hill says that you can use the power of subconscious mind and achieve whatever results which you want.
आपका सबकॉन्शियस माइंड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर कॉन्शियस माइंड एंड द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। आपके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक अगर सबकॉन्शियस माइंड अगर आपने जागरूक नहीं किया तो ये कनेक्शन कभी नहीं होगा। एंड व्हेन द कनेक्शन इज नॉट देयर, आपकी सिक्स सेंस, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस कभी आपको साथ नहीं देगी, कभी आप अपने रिजल्ट्स नहीं कर पाएंगे। आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क नहीं काम देगा अगर आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को यूज नहीं किया। यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय मेंटर नेपोलियन हिल। और इसके बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे कि हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यू कैन चेक आउट द एंटायर channel and see so many videos which I have made on how to use this power of your subconscious mind. Brain is an electronic switching station. क्या बेहतरीन एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे अगर रेडियो सिग्नल है कि रेडियो सिग्नल सेंड्स एंड रिसीव्स सिग्नल्स, इट्स अ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन मीन्स देयर आर फ्रीक्वेंसीज विच आर देयर। आपके ब्रेन से आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भेज रहे हो और रिसीव कर रहे हो। तो जब भी आपने आपके ब्रेन पैटर्न्स को चेंज किया, आपके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को चेंज किया, आपके ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को चेंज किया, तभी अट्रैक्शन चेंज होगा। बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। एंड एट दैट पर्टिकुलर अबाउट 100 years ago he mentioned all these principles जब भी साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ था। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द रियल and the charm of Napoleon Hill. He was so advanced in his thinking. Sex transmutation, the most misunderstood concept of Think and Grow Rich, which is the 10th step to riches. कैसे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से यू कैन बिकम अ जीनियस इन इंडस्ट्री, ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। मोस्ट पीपल गो ऑन सम अदर यूट्यूब वीडियो चैनल्स एंड दे गेट कंफ्यूज, दे हैव देयर ओन थिंकिंग कि ऐसा हमें यूज करना है, एंड दे रियली एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड दिस, it's a science how to transmute this sexual energy, and once you understand this science, you can become the genius. You'll start to live longer, you'll start to look healthy, and that's where you really start to get this particular principles of sex transmutation applied. इसका अलग से वीडियो मेरे चैनल पे है, you can check that out. Napoleon Hill says that 95% people on planet Earth have not used the power of their mind. अपने थॉट प्रोसेस को समझा ही नहीं है, एंड इसीलिए दे गो इन रन एंड अगेन गो इन पॉवर्टी। ओनली द फ्यू 2% और 3% पीपल अंडरस्टैंड दिस पावर। एंड जब भी वो पावर समझ में आपको आएगा कि आई हैव गॉट दैट पावर ऑफ दैट थॉट प्रोसेस, द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, तभी आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। द नेक्स्ट वन, द मास्टर की टू रिचेस। मोस्ट पीपल फील कि मुझे 2-3 चीजें समझ में आ गई, नाउ आई एम गोइंग टू थिंक एंड ग्रो रिच। गलत जवाब। द मास्टर की टू रिचेस, विच इज अ मास्टर की, कि जो भी आपको चाहिए, वॉट एवर हेल्थ यू वॉन्ट, वॉट एवर वेल्थ यू वॉन्ट, वॉट एवर हैप्पीनेस विच यू वॉन्ट, जो भी आपको चाहिए, इट्स अ मास्टर की। यू कैन गेट दैट ओनली एंड ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द 17 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। एक आधा प्रिंसिपल भी छूट गया, नहीं समझ में आ गया, तो वो जिक्सॉ पजल कनेक्ट नहीं होगी, एंड यू आर नेवर गोइंग टू अनलॉक दैट पर्टिकुलर मास्टर की। So understanding all the 17 principles, that's where you can unveil and you can use this particular master key. जो भी आपको चाहिए, you're going to get that. The 12 riches of life. One more thing which I learned from my mentor. There are 12 different riches of life. For normal people, rich is equal to money in the bank. बस पैसा पैसा पैसा, अरे पैसा बहुत आप अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन there are 11 other riches of life. और जब भी आपने ये पूरे 11 riches के साथ में अपने जहन में पूरे 12 riches डाले, at that time the financial freedom becomes inevitable. You have to get that particular success, but most people ignore those 11 riches. और अगर मानते भी, हाँ ठीक है, मान लिया, जाना नहीं, जड़ों तक जाना नहीं, and that's where they don't change their financial thermostat and they don't start to get the results. Having the understanding of the 12 riches of life is the key thing to attract that particular money in the bank. Napoleon Hill says कि आपका subconscious mind is like a magnet, और वो मैग्नेट का पावर आपके इमोशन से। तो जैसे आपने आपके इमोशन से वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करने का पावर दे दिया, तो जो भी आपने इमोशंस दिए हैं, जो भी आपके थॉट प्रोसेसेस रहेंगे, वो सारी चीजें अट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ मैग्नेट, और पावर इज योर थॉट, थॉट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड योर फीलिंग्स इज योर मैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आपने साथ में कंबाइन कर दिया, दैट्स वेयर आपके साथ में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, एंड एवरीथिंग यू वांट विल बी स्टार्ट टू कमिंग इन योर लाइफ। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय मेंटर नेपोलियन हिल। बढ़िया सा डेफिनेशन देते हैं नेपोलियन हिल अबाउट सक्सेस। ही सेज सक्सेस इज समथिंग व्हाटएवर यू वांट यू कैन अकम्प्लिश। आपको जो चाहिए आप हासिल कर सकते हो विथ योर ओन नॉलेज, विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स, ताकि किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, एंड यू स्टार्ट टू गेट व्हाटएवर रिजल्ट्स यू वांट
then and only then you are a success. He's got a different meaning of success. There's a lot of morality over here, but that's where the power of success starts to come using these principles of think and grow rich. Napoleon Hill says that knowledge is not power, but using that knowledge, organizing it in proper plans and then applying it makes it powerful. Most people say यार knowledge is power. No. Using that knowledge, उसको organize करेंगे और उसको start to apply करेंगे, तभी वो knowledge power में convert होता है. The next one, the law of cause and effect. जैसी करनी वैसी भरनी. As you sow, so shall you reap. We become what we think about. This is what I learned from my mentor Napoleon Hill. जैसे आपके विचार रहेंगे, जैसे आप सोचेंगे, जैसे आपके एक्शन रहेंगे, वैसे ही आपको रिजल्ट्स आएंगे. ये निसर्ग का नियम है, ये विश्व का विधान है, ये कुदरत का कानून है. आप इसको कुछ भी करो, आप इसको नहीं चेंज कर पाएंगे. This is beautifully depicted in the law of cause and effect. If you want to receive more in life, you got to give more in life. It is very, very simple. Most people want increment. हमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, लेकिन बस हमें इंक्रीमेंट चाहिए. अरे इन्फ्लेशन हो रहा है, हमें इंक्रीमेंट चाहिए. हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना नहीं, घड़ी देख के काम करेंगे. Well, you will never be able to get more in life if you have got that mentality कि मुझे तो एक्स्ट्रा चाहिए लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा करने वाला नहीं हूँ. गलत जवाब. Only when you start to give more, to do more, you go on a higher frequency and तभी you can start to get more in life. Very powerful concept. Understand this and start to apply it to get more results in life. The sequence of these 13 steps, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये 13 steps रखे हैं. The first step is desire. Second step is faith. The third step is autosuggestion. Fourth is specialized knowledge. Fifth, imagination. Sixth, organized planning. Seventh, decision making. Eighth is persistence. Ninth is the power of mastermind. 10th is the mystery of sex transmutation. 11th is subconscious mind. 12th is the brain. And 13th is the sixth sense. क्या बेहतरीन कड़ी से कड़ी मिलाई है. And if you understand these 13 sequences, the 13 patterns, that is when you see the genius of Napoleon Hill. इसको डिटेल में आप स्टडी करेंगे, समझेंगे. That's where you understand कि एक के बाद एक दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी मिलती है. And that's where you can unlock that richness, that unlock that master key to get the richness which you want to have in your life. Self-confidence formula. There is a formula to develop self-confidence. It is there in the chapter of faith. And जैसे वो बोलते हैं कि अगर आपने वो फॉर्मूला को अपने आप को आईने में देख के 10 minutes a day for 30 days अगर आपने प्रैक्टिस किया, you start to develop that strong self-confidence कि कुछ भी हो जाए, I've got to achieve the results, I will achieve the results, I must achieve the results, I can achieve the results. That's the power of self-confidence. 6 steps to turn desire into gold. क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया है कि अगर जो भी आपका डिजायर है उसको आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो देयर आर दिस 6 स्टेप्स. इसका भी अलग से वीडियो यहाँ पे मेरे चैनल पे है. अंडरस्टैंड दिस 6 स्टेप्स, फॉलो दिस 6 स्टेप्स एंड यू कैन रियली स्टार्ट टू कन्वर्ट जो भी आपका डिजायर है इनटू गोल्ड. वन मोर कनेक्शन, 3 feet फ्रॉम गोल्ड. आर.यू. डार्बी की स्टोरी में क्या बताया गया है कि मोस्ट पीपल क्विट, कि एक डिफिकल्टी आती है, एक हर्डल आया, एक ऑब्स्टिकल आया एंड क्विट. बट सम पीपल आर स्मार्टर. Before quitting, they take advice, they take suggestions, they take opinions कि यार कैसे करूँ. वैसे वही स्टोरी में ऐसे ही हुआ था कि the where are you Darby quit 3 feet from gold. सबसे biggest gold mine was there, but he quitted and he was like bankrupt at that particular time. But he understood the lesson that I will never ever quit. When a customer says a no, that is not a no. You will never quit, and that's where you can really start to get the results. Pleasing personality. आपकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग होनी चाहिए, नॉट टू गेट सम काइंड ऑफ बोनसेस और मे बी गेट सम बिकम द किंग ऑफ द पार्टी, बट आपकी पर्सनैलिटी में भी प्लीजिंग जब भी आप ये चारों क्वालिटीज के आप एस्पेक्ट्स को यूज करेंगे. योर फिजिकल पर्सनैलिटी, योर इमोशनल पर्सनैलिटी, योर इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी एंड योर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी. एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी हैज टू बी अट्रैक्टिव. लेट्स से सदगुरु गौर गोपाल दास जी, really having that strong spiritual angle of their personality being attractive. Let's say physical personality, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, strong personality which is physically attractive. So every angle has to be attractive to make your personality pleasing, and that's where you really start to get the results. The concept of invisible counselor. हाँ, आपके पास एक inner circle होना चाहिए. Maybe they can be in your imagination also. नेपोलियन हिल ने बताया गया इन इस फाइनल स्टेप टू रिचेस विच इज द सिक्स्थ सेंस कि कैसे ये इनविजिबल काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे इन योर डिफिकल्टीज. दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच टू इग्नाइट योर सिक्स्थ सेंस. थॉट्स बिकम्स थिंग्स. Very powerful concept, most misunderstood.
एंड यही लाइन से, यही चैप्टर से, विच इज माइंड पावर और थॉट्स आर थिंग्स से एनलाइटनिंग हिल इंस्पायर्ड हुए थे एंड ही नरेटेड द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। तो पहले पैराग्राफ में ही उन्होंने लिखा था इन थिंक एंड ग्रो रिच दैट योर माइंड पावर वेयर योर थॉट्स कैन बिकम थिंग्स। अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स एंड थॉट इज एनर्जी। Thought is the most potent form of energy. Thought waves are cosmic waves that penetrate all time and space. तो आपके thoughts को आप focus करेंगे, मन को वश में करेंगे कि ये विचार हमें चाहिए. That's where it starts to manifest in your reality. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. The most powerful quote from Napoleon Hill, and it mentions like this कि जो भी आपके mind में conception हो रहा है, whatever the mind, whatever जो भी आपको चाहिए, not a restricted thing. Whatever the mind can conceive, जो भी conception होता है in your mindset, and believe कहाँ होगा? Believe in your subconscious mind. So conception in your conscious mind, the subconscious mind is have the belief systems, and then what happens? You got to act upon it. Massive, consistent actions आप लेंगे, then it can achieve. So it's called as conception, belief, and action. Conceive, believe, achieve. Conceive, believe, achieve. That's one of the most powerful things which I learned. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. And the final one which I think is the most powerful one is this. And this has come from Andrew Carnegie giving directly to Napoleon Hill. He says like this: any idea which is held in the mind, that is emphasized, which is either feared or revered, will clothe itself in its most physical and appropriate form available immediately. Now, what is this concept? Andrew Carnegie ने नेपोलियन को क्या समझाया था? The richest man in the world. I'm giving this particular advice. He said, any idea, जो भी idea है, which is held in the mind, जो भी आपने emphasize किया and you focus on the particular idea, which is feared or revered, या तो डर लगता है या तो अच्छा लगता है, will immediately go, not after 2 years or 5 years, तुरंत वो मैनिफेस्टेशन होगा इन द मोस्ट कन्वीनियंट एंड अप्रोप्रिएट फिजिकल फॉर्म में आपको वो चीज़ें दिखाई देगी. पैसा अकाउंट में आएगा, मनी इन द बैंक विल कम, रिलेशनशिप्स विल बी बेटर, health will be better. That's the most powerful idea which I learned from Napoleon Hill. ये 40 ideas I want to share with you in this particular video. This is a tribute to my mentor Napoleon Hill on his 140th birth anniversary. ये 140 ideas में से ऐसे कौन से 4 ideas आप यूज करेंगे अपने जीवन में टू टेक योर रिजल्ट्स टू द नेक्स्ट लेवल? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको किस तरह के और वीडियोस आपको देखने हैं हमारे चैनल पे, एंड आई विल डेफिनेटली सी योर कमेंट्स एंड आई विल स्टार्ट टू मेक दोस वीडियोस. इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, press the like button, share this particular video to someone which will be useful for this particular video, and also subscribe to our channel. Let's celebrate this birth anniversary of my mentor Napoleon Hill, and let's everybody start to think and grow rich. Thank you so much.